Hello, good evening. आपको एक दफा फिर से शाम का सलाम And good afternoon from England. और इंग्लैंड से आपको दोपहर का सलाम। Don't be misled what is behind. Still, he is in England, not in California, by the Golden बराए Gate में Bridge. बराए मेहरबानी जो आप भाई पॉल के पीछे तस्वीर देख रहे हैं उससे मत गलतफहमी खाइएगा क्योंकि भाई पॉल अभी भी इंग्लैंड के अंदर ही है। मुझे लगता है ये पुल शायद ऑस्ट्रेलिया का है। आई थिंक No, California, Golden कैलिफोर्निया। Gate. California, गोल्डन ओके जी ये San कैलिफोर्निया Francisco, California. ओके Yeah. Paul, you should have London Bridge behind Yes, it's more Well, that beautiful. may be next time. you. Okay. I'm Good. new to this thing, so I don't. We've got London Bridge. Okay, no problem. So we welcome all of you in Jesus' name. हम आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहते हैं। And I'm going to request Mavish to open us with prayer. Hello, महविश Mavish. को हम दरख्वास्त करेंगे कि महविश दुआ में मदद करेंगी। Hello, lovely girl. Where are you? Good evening, Chachaji. Good evening. Good evening. Good evening. So, Sure, Chachaji. Sure. please pray. Okay. Okay. Thank you. कदूस जिंदा जलाली आसमानी खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। ऐ खुदा बाप आसमानी मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि जो तेरे अल्फाज ऐ खुदा बाप आसमानी तेरा खादम हमें सिखाए वो हम सबों की जिंदगियों में बाइस बरकत हो और जो कुछ हम सीखे वो हम सब एक दूसरे की जिंदगी के लिए उसका फलदार साबित हो सके। यीशु बाप जी आज की इस क्लास में तू हम सबको बड़ी बरकत दे मांगती तेरे मीठे जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। आमीन। Amen. Amen. Okay. So let's recap what we were talking last time, and then our teacher will continue from where we left off last time. देखें जरा हम जो हमने पिछली दफा पढ़ा था उसको दोहराएंगे और देखेंगे कि जो पिछली दफा हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था। Okay. So here is the life of Christ. हमने मसीह यीशु की जिंदगी के ताल्लुक से सीखा। And here we have outlined the course, the lesson, that what we will be talking about. और हमने देखा कि जिस हमने फरीज देखी जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। Then who Jesus is? यीशु कौन है? Jesus himself asked this question. What do people say that I am? और यहाँ तक यीशु मसीह ने यहाँ तक कि खुद भी ये सवाल किया कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? And then different people ask this question and they have different belief about Jesus. और फिर मुख्तलिफ अकायद ने यीशु मसीह के हवाले से सवाल उठाए, सवाल किए और उनका मसीह यीशु की शख्सियत के बारे में ये नुक्ता नजर या इजहार ख्याल है। And then we learn about eternality and the pre-existence of Jesus. और फिर हमने यीशु मसीह की पहले से मौजूदगी को भी हमने देखा। Okay. Then we are not going into detail, but just want to show what we were talking about. Then Christ in the Old Testament. और फिर हमने देखा मसीह यीशु पुराने अहदनामा के अंदर। And we saw that through direct prophecy, Jesus is there. और हमने देखा कि हम बराह रास्त जो उनकी नबूवत है उससे मसीह यीशु को देखते हैं। And then what we call the picture is there, the type we can say. Yes. Yeah. और फिर हम इल्मे अनवा से मसीह यीशु इल्मे अनवा की नबूवतों से हम मसीह यीशु की तस्वीर को देखते हैं। And then I believe we covered this manifestation of Christ. क्या हमने ये जो सा just a minute please. Is it right?
क्यों जी, हमने इसको कवर कर लिया मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट को स्टूडेंट्स? जो सी मसीह यीशु की तस्दीक है, ज़हूर ये है। लास्ट वीक पास्टर Yes. चार्ल्स ने Yes. ओके Okay. यीशु का मुजस्सम होना था, जी पाजी साहब, यीशु मसीह के मुजस्सम होने तक। अच्छा Yes. इनकारनेशन तक हमने कर लिया है। Incarnation of Christ. यीशु Yes. मसीह के मुजस्सम होने के ताल्लुक से हमने इस तक हमने पढ़ लिया है। I knew that, but Tajassum. I just wanted to check if you know it. डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे पता था, लेकिन मैं आपको देख रहा था कि आपको भी याद है कि नहीं। बोलते नहीं गए किधरे। Just a little test, you know. ये छोटा सा इम्तिहान था। So now from here, our professor is going to continue. और यहाँ से अब हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब बहुत पढ़ाएंगे। यस So nicely, Dr. Charles put it. Thank you, Dr. Charles. Both Shukriya. Right, here we are. Dr. Yes. Charles, could you please put the PowerPoint back? It was there and it went. That's better. Right, here we are, Shakib. Right. Yes. So, Dr. Charles shared with you all last week about the deity or divine nature of Christ. देखें और देखें जरा यीशु जो डॉक्टर चार्ल्स हैं, उन्होंने मसीह यीशु की अलूहियत के बारे में आपसे बात की और उसके ताल्लुक से हमने पहले ही देख लिया है। So we know that this is the great mystery that Jesus Christ had humanity, divinity. He was God, and he's also 100% human. देखिए ये एक बहुत ही बड़ा राज है, पोशीदा राज है कि ये बात को समझना कि मसीह यीशु इंसान इब्ने आदम यानी इंसान होते हुए और उसी वक्त में 100% खुदा होते हुए। So we're now going to look at various references that prove he was human, his humanity. और देखें हम कुछ हवाला जात हैं जिनके ऊपर गौर करेंगे जिससे साबित होता है कि मसीह यीशु जो उनसे हैं उनकी इंसानियत या इंसान होने को साबित करते हैं। Luke 2 and verse 40, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. और देखिए मेरे साथ निकाले लूका की अंजील उसका दूसरा बाप और उसकी 40वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से ममूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। Right, thanks. So next, two references are there next. Matthew 1:1 and Matthew 8:20. और मत्ती की अंजील उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्राहिम का नसबनामा, और 8वां बाप और 20वीं आयत को भी हम देख लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा कि लूम्बियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर दने के लिए भी जगह नहीं। Now we're going to look at various references that prove Jesus was human, his humanity. और फिर देखें हम और कुछ हवाला जात हैं जिनको देखते हैं जो कि दर हकीकत मसीह यीशु के इंसान होने की का सबूत देते हमें नजर आते हैं। Matthew 4:2, he was hungry. मत्ती की अंजील चौथा बाब दूसरी आयत बताती है कि वो भूखा था, उसको भूख लगी। John 19 and 28, he was thirsty. यूहन्ना 19:28 उसकी प्यास के बारे में बात करता है। John 4 and verse 6, Jesus got tired. और यूहन्ना चौथा बाब 6ठी आयत मसीह यीशु की थकावट के बारे में बात करता हुआ नजर आता है। John 11:35, shortest verse in the Bible. He was grieved, he was so moved to the point of tears. और देखें यूहन्ना 11 बाब 35वीं आयत यीशु मसीह के दुख के ताल्लुक से बात करते हैं कि यहाँ तक कि उसका दुख आंसुओं के अंदर तब्दील हो गया।
Matthew 4 and verse 1, he was tempted. मत्ती की इंजील चौथा बाब पहली आयत मसीह यीशु के आजमाए जाने के ताल्लुक से उसकी आजमाइश के बारे में बात करता है. Luke 23 and 46, he experienced physical death, that was on the cross. और लूका की इंजील 23वां बाब 46वीं आयत यीशु मसीह की जिस्मानी मौत के तजर्बे के ताल्लुक से बात करता नजर आता है. So we've looked at the various points of Jesus being human, his humanity, he's one of us, but without any sin at all. देखें अगर इन तमाम हवालाजात को हम देखें तो हमें पता चलता है कि मसीह यीशु हम में से ही एक था, लेकिन और उसमें और हम में या उसमें या एक इंसान दूसरे इंसान में फर्क ये है कि वो गुनाह के बगैर था, वो गुनाह से बर्रा था, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था. Next slide, please. Right, Shakib, this is a quote from Martin Luther. You can just translate it into मार्टिन Urdu. लूथर की ये एक कोट है जिसको हम देखेंगे. मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर मसीह यीशु हकीकी फितरती खुदा. Sorry, we have another slide. Sorry for that. Oh, okay. Back to this slide. Okay. Now, still looking at. Oh, hang on. Have we gone to the deity of Christ? अब हम Yes, देखेंगे okay. खुदा की खुदाई या खुदा की अलूहियत के ताल्लुक से हम देखेंगे. Right. Various references. John 10 and 30, Jesus stated, now this is what Jesus is saying, the Father and I are one. यीशु मसीह की अलूहियत या यीशु मसीह की खुदाई के बारे में हम देखते हैं कि यूहन्ना 10वां बाब 3री आयत ये कहती है कि बाप और मैं एक हैं. Just 1 second, Shakid. Yes, sir. John 10 and 36, Jesus had the titles of the Son of God. और यूहन्ना 10वां बाब उसकी 36वीं आयत के अंदर हम यीशु मसीह के लिए जो इब्ने खुदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसको देखते हैं. As well as Lord, Matthew 8 and verse 20. इसके साथ साथ मत्ती 8 बाब 20वीं आयत में खुदा के लिए जो खिताब उसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसको देखते हैं. 1 Corinthians 2 and 16, he's equated or equal with Yahweh in the Old Testament. और देखें कि पुराने अहदनामा के अंदर हम यीशु मसीह को यहोवा यानी खुदा के तौर पर हमें के तौर पर वो आवाज मिलती या उसके ताल्लुक से यहोवा के नाम से जिक्र मिलता है. So we explained to the students that in the Old Testament or Old Covenant times, the Jewish people believed the name of God was so holy you couldn't say it. So that's why they had the Y and the H for Yahweh. और देखें कि पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि जो इस्राएली थे वो खुदा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत अपने दिल के अंदर रखते थे और इसलिए वो उसको यहोवा कहकर बुलाते और यावे उसको वो अपनी उनकी यहूदी ज़बान के अंदर यावे कहा जाता खुदा. Okay, how does it come over Yahweh? What's Yehovah. the transliteration? Jehovah. Yes. I thought it was. Okay. So that's like the original Hebrew then. Yes. Yes, you're right. Yes. Yeah, I picked that up. Thanks. Right. On the right-hand side, there are two references. Shakib, if you could please read to the students in Urdu, Isaiah 44 and verse 6. Okay. Actually, somehow it's not full on the screen, but I can read it from Bible. It's not full on my screen either. Yes. यसाया उसका 44 बाब यसाया नबी का सहीफा उसका 44 बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा है. खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और आहर मैं ही अव्वल और मैं ही आहर हूँ
और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और उसके बाद मेरे साथ निकाले मुकाशवा, रेवलेशन, मुकाशवा पहला बाब और उसकी 1:17, yeah. यस 17वीं आयत लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझे अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। आमीन। Right, that's good. So let's just tell the students, in the Old Testament, there are 365 prophecies about the life, death, and resurrection of Jesus. देखिए पुराने नामा के अंदर 365 हम यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह के मौत के ताल्लुक से, मसलूबियत के ताल्लुक से, जी उठने के ताल्लुक से 365 हम पेशन गोइयों को, अनुभूतों को पढ़ते हैं। And in the life of Jesus, in the Gospels, we see that every one of those prophecies was fulfilled. और अनाजील के अंदर हम देखते हैं कि उन तमाम जो सी अनाजील हैं, उनके अंदर उनकी तकमील, उन 365 जो पेशन गोइयां, उनकी तकमील को हम देखते हैं। Thereby proving that Jesus was and still is God. और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा था और अब भी वो खुदा है। And we've read Revelation. This goes together or correlates with Revelation 1:17, which we've read. और हम इसका जो सा ताल्लुक है वो मुकाशवा पहला बाब और उसकी 17वीं आयत से हमने जैसे पढ़ा है, उधर से भी हमें इसका ताल्लुक मिलता है। And we know that John, the Apostle John, was in Patmos, on the island of Patmos, after the death and resurrection of Jesus. और देखते हैं हम जो यूहन्ना रसूल था वो दर हकीकत पतमस के जजीरे के ऊपर था यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद और आसमान पर उठाए जाने के बाद। Thereby, again with the resurrection, proving that Jesus is God. और यीशु मसीह का जो जी उठना है वो दर हकीकत इस बात को मुकम्मल सबूत देते हैं कि यीशु मसीह वाकई ही खुदा है। And this statement, I am the first and the last, that means I'm the Alpha and the Omega, means that Jesus is the beginning and is the end also. और जब ये लिखा हुआ है कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। इसका मतलब है शुरू में भी खुदा यीशु था और यीशु हमेशा रहेगा। And that is also in Revelation chapter 1 and verse 8. और हम इसका एक और हवाला मुकाशवा का पहला बाब 8वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। Acha, yeah. Now let's get back to the left side of the slide, and various references we will be given that proves that Jesus is God. और अगर आप देखें स्लाइड के ऊपर आपको बहुत से यहाँ पर हवाला जात दिए गए हैं जिसके ऊपर आप बेहतर तौर पर नजरसानी करके ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा है। Colossians 1:15 to 16, he was and still is the creator. कुलसियों पहला बाप उसकी 15वीं आयत से लेकर 16वीं आयत हम देखते हैं कि वो तहलीक करने वाला। Matthew 8:26, Jesus had power over nature. मत्ती की अंजील 8 बाब 26 आयत इस बात को बताती है कि यीशु मसीह का फितरत के ऊपर मुकम्मल तौर पर कुव्वत और ताकत थी। He would command the winds and the waves, and there'd be peace. He stopped the storm. वो तूफानों को और हवाओं को हुक्म देता और वो थम जाती, रुक जाती। John 11, we see that Jesus had power over death. यूहन्ना की अंजील 11वां बाब हमें इस बात के बारे में बताती है कि यीशु मसीह मौत पर भी कुव्वत और ताकत रखता है।
he spoke the word and Lazarus came back to life. हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से कलमे को जारी करता, कलाम करता और लाजर कब्र से बाहर निकल आता है। Next reference is Mark 2 verses 1 to 12. और अगला जो सा हवाला है वो मरकस की इंजील उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक है। What I'm going to do is summarize this passage to save time. और मैं इस हवाले को इसका खुलासा बयान करूंगा क्योंकि हम अपने वक्त को बचाएंगे। Because in this passage it says he had, that is Jesus had, power to forgive sin. क्योंकि यहाँ पर मरकस रसूल अपनी अंजील को लिखते हुए कहता है कि यीशु मसीह के पास ये कुव्वत और ताकत है कि वो गुनाहों को माफ कर सकता है। मरकस की मार्फत लिखी अंजील में हम देखते हैं। And please, students, turn to this reference of Mark chapter 2. मेरे साथ निकालें जरा, आप पढ़ने में मदद करेंगे, इसलिए अपनी बाइबल्स खोलें। मरकस की अंजील उसका दूसरा बाप निकालें मेरे साथ, मरकस 2 बाप। Because it says in Mark 2 and verse 7, मरकस 2 बाप who can 7वीं आयत। forgive sins but God alone? Okay, can one of our student can read this verse, just to Yeah, take sure. them with us? Yes. Yeah. जी पढ़े कोई स्टूडेंट जी, ठीक है। हैप्पी विनर्स। मगर जब वो भीड़ के स्वरूप से उसके नजदीक ना सके तो उन्होंने उस नहीं, 7वीं आयत सिर्फ। 7वीं आयत जी। ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा को गुनाह कौन माफ कर सकता है? Amen. Amen. Thank you, sister. Amen. Right. Yeah, Shukri. So in this passage, 2 verse 7 is saying only God can forgive sins. देखें यहाँ पर हम दूसरे बाप की 7वीं आयत के अंदर देखते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ खुदा ही है जो गुनाह माफ कर सकता है। In Mark chapter 2 is a passage where Jesus healed a man that was paralyzed. और मरकस की इंजील दूसरा बाप ये वो बाप है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने एक मफलूज को शिफा दी। Hebrews 1 and verse 8 that Jesus rules as God. और अब्रानियों पहला बाप 8वीं आयत हमें यह बताते हैं कि यीशु मसीह खुदा के तौर पर हुक्मरानी करता है। Right. Shakib, if one of the students could please read Hebrews 1 verses 1 to 4. मेरे साथ निकाले अब्रानियों पहला बाप पहली आयत से लेकर 4वीं आयत तक, और कोई स्टूडेंट पढ़ने में मदद करे। अब्रानियों का खत उसका पहला बाप पहली आयत से लेकर 4वीं आयत तक। जी पढ़ें जी कोई। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जैसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया उस और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का पर तो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे वाला पर कुबरिया am I right? कुबरिया, हाँ जी कुबरिया। 4वीं आयत तक पढ़ना था ये ओके, ये 3rd है। अच्छा ठीक। कि दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास भी उनसे अफजल नाम पाया। आमीन। मिरास में। Thank you, Mevish, Sister Mevish. So he was the exact representation of God inwardly and outwardly. देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा मुकम्मल तौर पर, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर हम खुदा को मुकम्मल तौर पर उसकी जात के बारे में देखते हैं। Next slide, please. The hypnostatic union. Right, now, Shakib, this is just for you. This is
okay, a term in Greek. So let's Sorry. explain this to the students. This teaching or doctrine came up at the Council of Chalcedon. ये जो ये दर हकीकत ये जो तालीम है काउंसिल ऑफ चालसीडोन से ये उन्होंने निकाली है hypostatic union. Yeah, well, I don't expect them to get it in Greek. It's what it is. Hypo means in Greek, it means two. So let's explain it to the student. It's Jesus is 100% God and he's 100% man. देखें इसको उर्दू में जो इसका तर्जुमा है वो है असासी या रसूबी इसका मतलब ये है कि ये दर हकीकत कौंसिल ने कहा कि ये उन्होंने इस बात को कहा कि यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर इंसान और मुकम्मल तौर पर खुदा है. And this is the divine mystery. और ये दर हकीकत अल्लाह ही एक राज है. Right, so the simplest definition is Jesus Christ is fully God and fully man. जो इसकी सादा सी तारीफ है वो ये है कि असासी इत्तेहाद वो ये कहता है कि यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर इंसान और मुकम्मल तौर पर खुदा है. वो यूनाइटेड इन वन पर्सन वो एक ही शख्सियत के अंदर जुड़ा हुआ है या मुत्तहिद है. Thanks for explaining that. So the only person with two natures, 100% divine and 100% humanity. देखें यीशु मसीह वाहिद वो है जो कि 100% अल्लाही और 100% इंसानी है. United in one person, and that person is Jesus. और यीशु मसीह ये दोनों फितरत के अंदर अल्लाही फितरत और इंसानी फितरत के अंदर मुत्तहिद है, जुड़ा हुआ है. एक ही शख्सियत में सिर्फ यीशु मसीह है. ये जो उनका असासी इत्तेहाद है वो इसकी तारीफ है. And that is why Jesus is called the God man. और इसलिए उन्होंने कहा जीसस यीशु मसीह खुदा इंसान है. Next slide, please, Shakib. Now it's the quote from Martin Luther. Yes, sir. अब मार्टिन लूथर की ये कोट है, ये कोल है जिसको हम देखेंगे. So I don't need to read it. I'll explain the quote. If you could just translate that, please, into Urdu. If Christ does not remain the true nature God, अगर मसीह यीशु खुदा की हकीकी फितरत को नहीं रखता, then we are lost. तो फिर हम खो चुके हैं. For what good would be the suffering and death of the Lord Christ do me if he were merely a man such as you and I are? फिर हम खो चुके हैं और फिर क्या उस दुख जो से हैं वो बेहतर होंगे और मौत मसीह यीशु की मेरे लिए, तो फिर क्या उसके दुख और उसकी मौत मेरे लिए दुख होंगे. अगरचे वो सिर्फ इंसान था जैसे मैं और आप हैं, तो फिर फिर वो शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर, इंसान के ऊपर फतह नहीं पा सकता. He would have been fought. क्योंकि वो फिर इसके लिए कमजोर होता और हमारी मदद ना कर सकता. इसका आसान से लफ्जों में मैं तर्जुमा करता हूं कि यीशु मसीह अगर हमारी तरह इंसान होता तो कैसे वो कैसे दुख उठा सकता था और मौत को हमारे लिए सह सकता था, और कभी भी उसकी मौत या उसके दुख हमें शैतान से, मौत से और गुनाह से आजाद ना कर सकते. इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह इंसान नहीं बल्कि वो खुदा भी है.
Yes, sir. Well, that was quite a job that Shakib. Yes. That's a lot to translate. Yes. Let's explain this to the students. Now, I what I Luther is saying, because he's God, only his death on the cross could bring our salvation. देखें, क्योंकि वो खुदा है, इसलिए उसका सलीब के ऊपर चढ़ जाना और मसलूब होना ही सारी इंसानियत के लिए फायदामंद है। अगरचे वो सिर्फ इंसान होता तो फिर कोई फायदा नहीं होना था। बड़ी जबरदस्त बात है। An ordinary man who was not divine, not having the life of God, his death would have not brought our salvation. देखें, वो जो आम इंसान है और जो खुदा अल्लाही फितरत नहीं रखता, तो इसका मतलब ये है कि वो आम इंसान है और उसके अंदर गुनाह है। और कैसे गुनहगार शख्स, गुनहगार आदम फिदिया दे सकता था पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन वो चूंकि खुदा था इसलिए वो पाक था और इसलिए उसने तमाम इंसानियत के लिए अपने बेटे का फिदिया दिया। Only Jesus, सिर्फ who यीशु was God, जो कि खुदा था, only his death alone could have brought about our salvation, because he was वही God. है, वही ऐसा वाहिद पाक इंसान था जो कि अल्लाह ही जात होने के बायस, फितरत होने के बायस पाक था और इसलिए उसने हमारे लिए फिदिया अदा किया है। An ordinary man's death would have not been able to defeat Yes. the devil, death, and sin. आम आदमी कभी भी शैतान, मौत और गुनाह के ऊपर फतह नहीं पा सकता था, मुमकिन ही नहीं है। And this is why God the Father sent his only begotten Son, Jesus, to die और in our Amen. place for the forgiveness of our sin. Hallelujah. हालेलुया। और यही एक वजह है कि खुदावंद ने अपने प्यारे बेटे यीशु को हमारे गुनाहों की माफी के लिए इस जमीन पर भेजा, क्योंकि उसको पता था कि सिर्फ उसके बेटे का फिदिया ऐसा है जो इंसानों को उनके गुनाहों से मखलसी दिला सकता है। Right, that's quite a lot to explain from Luther. Next slide, please. The roles अगली of स्लाइड। Jesus. अब देखेंगे मसीह यीशु का किरदार या उसका हिस्सा। Now, what we're going to do for the students is look at Jesus as prophet, priest, and king. हम देखेंगे यीशु मसीह का जो किरदार है वो नबी के तौर पर, काहिन के तौर पर और बादशाह के तौर पर। And these three roles of prophet, priest, and king also prove Jesus' divinity, the fact that he is God. और देखें, ये तीनों किरदार दर हकीकत यीशु मसीह की अलूहियत को भी साबित करते कि वो वाकई अल्लाही था। So, prophet, his first event or first coming. देखें, ये नबी होते हुए यानी उसकी पहली आमद, पहली आमद। Secondly, as priest, or as it says in Hebrews, Jesus is our great high priest. और देखें, जैसे अब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि दूसरी बात उसका काहिन के तौर पर किरदार, और क्या लिखा है अब्रानियों के हाथ में, वो हमारा सरदार काहिन है। Right, so we see he was a priest in that, first of all, his death on the cross. जब हम उसको काहिन के तौर पर, काहिन के किरदार में देखते हैं तो हम देखते हैं सलीब के ऊपर उसकी मौत। And according to Hebrews, his current or present ministry right now is that he's our great high priest. और देखें फिर अब्रानियों के हाथ में जैसे हमने देखा कि उसकी मौजूदा खिदमत वो क्या है कि वो हमारा सरदार काहिन है। Priest mean, what does it mean to be a priest? You appear on behalf of the people. काहिन का मतलब ये है कि आप लोगों की जगह पर उनके लिए
कफारा पेश करते हैं। So we know after the resurrection in Acts chapter 1 that Jesus ascended to be with God the Father. और देखें अमाल की किताब उसके पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने बाप के पास उठाया गया। So the risen Jesus has ascended to be with God the Father for the last 2000 years plus. और देखें हम देखते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और हम देखते हैं कि 2000 साल से ज्यादा हम देखते हैं कि पहले वो आसमान पर अपने बाप के पास उठाए गए। And for the past 2000 years, Hebrews says Jesus has lived to make intercession for us. और उस pardon me, For the last 2000 years, Hebrews said that Jesus has lived to make intercession for us. और देखिए अब्रानियों का खत वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए शफायत करता है। Right now, Jesus is seated at the right hand of God the Father and he's praying, he's interceding for you and for इस me. वक्त में यीशु मसीह अपने बाप के दाहिने तरफ बैठा हुआ और हमारे लिए शफायत करता है। Thirdly, the role of Jesus is that he is king. और फिर जो तीसरा किरदार है मसीह यीशु का वो है बादशाह होने का किरदार। And so he is ruling, the yes. ascended person of Jesus. He is ruling as King of Kings and Lord of Lords from और heaven. ये तीसरा जो किरदार है कि वो आसमान से हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है और मुस्तकबिल में भी वो हमारे बादशाह के तौर पर जमीन पे हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा। And in the future on earth also. और मुस्तकबिल में वो जमीन पर हमारे बादशाह के तौर पर हम पर हुक्मरानी करेगा। So the book of Revelation speaks of the millennium, the 1000-year reign of Christ. और इसलिए मुकाशवा की किताब 1000 साला बादशाह के ताल्लुक से बात करती नजर आती है। And the book of Revelation also speaks about the second coming of Jesus. और इसलिए जो मुकाशवा की किताब है वो यीशु मसीह की आमदे सानी के ताल्लुक से भी बात करते नजर आती है। And in Revelation 19 and verse 16, Jesus is referred to as the King of Kings and Lord of Lords. और देखें मुकाशवा की किताब You could read that in Urdu, please. yes, yes. Revelation 19 19:15, sir. verse 16. 16 मुकाशवा की किताब 19वां बाब 16वीं आयत और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आमीन। Now, end times or second coming is a big subject and I don't want to get into it now. जो आखिरी क़याम है या यीशु मसीह की आमद सानी है ये बहुत बड़ा एक मजमून है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। But we have seen from the three roles of Jesus, that's prophet, priest and king, thereby prove that Jesus is God. यीशु मसीह के हम तीन किरदार देखते हैं, पहली आमद नबी के तौर पर और फिर हम देखते हैं कि वो काहिन के तौर पर जब उसने सलीब के ऊपर मौत पाई और अभी की उसकी जो खिदमत है मौजूदा खिदमत और फिर बादशाह के तौर पर नबी काहिन बादशाह। Right, Shukriya. So what we've seen in this lesson is proved that Jesus is God. So इस जो सबक है इसके हम अंदर क्या देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को साबित करते हैं कि वो खुदा है। He's also proved his humanity, that Jesus lived as a human upon the earth. और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि कलाम इस बात को वाज़िया साबित करता है
कि यीशु मसीह ने जमीन पर अपनी इंसानी जिंदगी को गुजारा। And when we looked at the union, we saw that the divine or the great mystery that Jesus is 100% God and he is 100% man. और जब हमने असासी या रसूबी इत्तेहाद को देखा तो हमने देखा कि यीशु मसीह 100% खुदा और 100% इंसान था। So there's no other person और in कोई the history of mankind और कोई भी इंसानी तारीख में कोई भी ऐसा इंसान या शख्स नहीं that has ever been or will ever be 100% man and 100% God like Jesus was. और कोई भी उस जैसा मुकम्मल तौर पर इंसान और मुकम्मल तौर पर खुदा नहीं जैसा मसीह यीशु है। And as we have seen, ample proof from the Bible and the reading of people like Martin Luther, we have been given ample proof that Jesus was 100% God and also 100% man. और देखें जैसे हमें कलाम मुकद्दस के हवाला जात से पता चलता और उसके साथ दुनिया की जबरदस्त शख्सियात जो इस बात को साबित करती है कलाम के वसीला से, जैसे मार्टिन लूथर है कि यीशु मसीह वाकई ही मुकम्मल तौर पर इंसान और मुकम्मल तौर पर खुदा है। And this is why, like Luther said, and the writings of the New Testament saying, only Jesus could bring about our salvation. और इसलिए मार्टिन लूथर और बहुत से और खुदा के अजीम सुरमा वो कलाम के वसीला से इस बात को आहस करते हैं कि हमारी नजात सिर्फ यीशु मसीह के ही वसीला से मुमकिन थी और मुमकिन है। Because क्योंकि no one else has been or ever will be for that matter 100% God and 100% man. क्योंकि कोई भी इस मकसद के लिए और इस काम के लिए वो मुकम्मल नहीं था क्योंकि मसीह यीशु ही वो मुकम्मल तौर पर 100% इंसान और 100% खुदा है। Now, Shakib, we have given the students a great big biryani. Sorry, great. We have given the students a great big biryani. Yes. They've had such a feast. They're absolutely full up. यह देखें हमने आपको बहुत ही जबरदस्त बड़ी बिरयानी की प्लेट दे दी है, ठीक है, जबरदस्त। उसके अंदर बड़े बड़े आपको पीस चिकन के और बीच में शामी कबाब भी दिए हैं। Biryani man. Yes. Yeah, well, Yes. I was supposed to have one last week in London, but somebody didn't cook it, but that's another subject. But the point being, this, students, is the greatest truth. Amen. This Sorry? is the greatest truth. This is the greatest truth of the Bible. लेकिन हाँ खुदा के आदम ये कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस का सबसे अजीम, सबसे जबरदस्त, सबसे मरकजी जो सच्चाई है वो ये है कि यीशु मसीह वो इंसान और खुदा है। Hallelujah. And Shakib, the students are responding. Yes. And in the chat box, they're telling it's a biryani for life. Yes. और ये स्टूडेंट्स ने लिखा है कि ये is called biryani for life. ये जिंदगी की बिरयानी है। Yes. Which is correct, Shakib, because Jesus said in John chapter 10 and verse 10, I have come to give life and life more abundantly. इसलिए हम यूहन्ना की अंजील के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। Because, which is correct, Barabbas, because our whole faith, the whole of Christianity is resting on this great truth of the incarnation of Jesus. क्योंकि हमारा मुकम्मल ईमान और हमारा यकीन इस बात के ऊपर है कि मसीह यीशु
मुजस्सम हुआ और इंसान की सूरत डालकर वो जमीन के ऊपर आया. Just in closing, as it says in 1 Corinthians 15, Paul says the death, burial, and resurrection of Jesus. Our whole faith is resting upon that. और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब के अंदर कहता है कि हमारा यकीन इत्काद उसके मरने, उसके दफन होने, उसके जी उठने और आसमान पर जाने के ऊपर है, और यही मसीही ईमान है. As you see behind me is the virtual picture of the bridge in San Francisco. और जैसे आप पॉल मॉर्श के पीछे देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है जो कि दर हकीकत ये एक पुल है जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है. And if you take the pillars away, let's just do that. If you take the pillars away, there's no bridge, it collapses. देखिए जरा, अगर आप इसके सतून, ये जो दोनों से बड़े आपको पिलर सतून नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको खत्म कर दे तो ये पुल नहीं रहेगा और वापस आपको पॉल का कमरा. Paul, I am saying that if you remove this pillar, then again you will see the blanket and room of Paul Marsh. Yes, so correct. Yeah, the map of Britain also. Yes. But the point being, well, whether it's California, the Great Bridges in Lahore, you remove the pillars, whole thing collapses. देखिए, बड़ी शानदार बात है वो ये है कि अगर किसी भी दुनिया का जितना मर्जी मजबूत पुल क्यों ना हो, सतून डाल दे, उनके पिलर्स को खत्म कर दे, जो ब्रिज है जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा. Good demonstration. Good demonstration. Yeah. Thank you, Dr. Cho. So what we're saying, these are the pillars or foundation of our faith in Jesus. It's all resting on what we've done in these last 3 classes. देखिए, ये दर हकीकत मसीह यसू हमारी जिंदगी का, हमारे मसीह ईमान का सतून है. अगर आप इस सतून को खत्म कर देंगे, आपकी मसीही ईमान कैसे मजबूत रह सकता है, कैसे बरकरार रह सकता है? मसीह यसू के बगैर हम कभी भी कायम नहीं रह सकते. अच्छा, now because of these pillars, Jesus is unique, he's special, he's one of a kind. There's nobody else like Jesus. और इन्हीं सतूनों की वजह से, पिलर्स की वजह से मसीह यसू मुनफरिद है, अलग है, और उस जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो वाहिद शख्सियत, वाहिद खुदा है. And that's why personally, because of the faith in Jesus, because of these pillars, belief in his divinity, that's why I believe in Jesus and don't believe in another belief system. और यही सतून के बायस, इसी जबरदस्त मजबूत पिलर्स के बायस मैं खुदा के ऊपर यकीन रखता हूँ, यसु मसीह के ऊपर ईमान रखता हूँ, क्योंकि यह ईमान जो है वो ही दर हकीकत मेरा सतून और मेरा किला है. Hallelujah. So, Dr. Charles, would you like to share something? I think, Paul, you did that very precisely. Beautiful. If you have any question, you can ask from सेकंड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स. अगर आपके पास कोई भी सवाल है, इस हवाले से जरूर करें. बहुत शानदार ये सब्जेक्ट है जो खुदा उनके खादम ने शुरू किया है. And very, very good, Paul. Thank you. Very good teaching. It was beautiful. Yes. जी जरूर पूछे सवाल, क्योंकि ये बड़ा ही अहम जो है वो मौजू है. और जितनी देर में आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बड़ा ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि जितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने 3 किरदार जो 3 रोल्स ऑफ जीसस है उनको एक्सप्लेन किया, उनकी वजाहत की. वो बहुत ही ज्यादा सीखने वाली चीज है कि यीशु मसीह के 3 किरदार कितनी आसानी के साथ हमें मसीह यीशु के जो खिदमत का मकसद है वो नजर आता है और किरदार नजर आता है. वाह.
थैंक यू पॉल फॉर दिस अमेजिंग 3 roles ऑफ जीसस। जी जरूर सवाल करें, माइक जरा अनम्यूट करें और सवाल करें।